नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आज 2 अक्टूबर को श्री CN वेणुगोपालन सर ने एक पत्र डीएफएस सेक्रेटरी श्री नागराजू को लिखा। पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर्स बाय स्टेट रन बैंक्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्व इन इट। I bring to your kind attention that the state-run banks controlled by the Department of Financial Services (DFS) have paid monthly ex-gratia to their pensioners whose pension was not revised in accordance with the pension regulations. The ex-gratia was paid from April 23 as per the terms of 12th bipartite settlement between Indian Bank Association and the United Forum of Bank Union. Though it was specifically agreed upon in the BPS that the ex gratia shall be reviewed in April 24, it has not been done in breach of the terms of the settlement. The IBA has expropriated the bank pensioner for the past 3 decades by not giving them the statutorily vested pension out of their own deferred wages. Coming out with the ex gratia is unbelievable. The ex gratia is a clever mask to veil the various wrong the IBA did in the past. It is paradoxical to be viewed as the brigand's charity. It is also to be noted that the state-run banks have paid the ex gratia by debit of the pension funds, which were created out of the CPS of employee and the CPS refunded by the retired employees' families of the deceased employees. Pension funds thus are the property of employees held by the banks in trust exclusively for payment of pension or family pension to the employees or his family as laid down in Regulation 5(2) of the pension regulations. With the right hand, IBA looted the money of the pensioners from their pension fund and gave it to the pensioners as their ex gratia. How can it be an ex gratia payment by the banks? If the payment is ex gratia, it has to be out of the revenue account of the banks. The banks that have to function with utmost integrity in each and every transactions were committing a fraud in drawing the money from the pension fund. Patently, the state-run banks had been paying pension to their whole-time directors out of the pension funds when such whole-time directors and not employees as defined by the Regulation 2(n), and the pension fund has the sole purpose of paying pension or family pension to the employees or his family in terms of Regulation 5(2) of the Bank Employees Pension Regulation 1995. The payment of pension to the whole-time directors out of the pension fund takes the shape of a corrupt act perpetrated by the DFS to the extent it was done by the banks as per the direction of the DFS itself, which gave previous sanction to the BAPR 1995. An introspection will lead you to a precise conclusion that the DFS was trampling upon the law made by itself. In the above circumstances, I make a humble request you to. और उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया उसमें मेंशन किया, direct the banks to credit back to their pension funds the amount of ex gratia paid to so far out of it to the debit of their revenue account. Second, pay the ex gratia out of the revenue account henceforth. Third, revise the ex gratia with effect from April 24 as agreed upon in the second 12th bipartite. Fourth, credit back to the pension funds the amount of pension so far paid to the whole-time directors out of it in rectification of the error. I may please be informed if I am wrong in any of the above statements I made. I trust you will pay heed to my request to redeem righteousness and glorify the DFS by making
it ethical in its functioning. Yours faithfully, श्री BN गोपालन। गोपालन साहब ने पहले से भी ये मुद्दे उठाए और अब भी, जैसा कि आपको याद होगा कि एक्स-ग्रेशिया का पेमेंट करते समय आरटीआई में 2 बैंकों ने जवाब दिया था, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कि एक्स-ग्रेशिया का पेमेंट पेंशन फंड से किया जा रहा है। इनका कहना है कि पेंशन फंड को हम एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के लिए टच नहीं कर सकते, इट मस्ट बी पेड फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट। सेकेंड पॉइंट इनका कहना था कि अप्रैल 24 में एक्स-ग्रेशिया रिव्यू होना था, जो अब तक नहीं हुआ, सो इसको रिव्यू करके अकॉर्डिंगली पेमेंट किया जाए। थर्ड, एक पॉइंट और था कि पेंशन फंड से होल टाइम डायरेक्टर्स का पेमेंट नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ है? इन सब कॉन्स्पिरेसी को दूर किया जाए ताकि डीएफएस का एक अहमियत बना रहे और डीएफएस इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि हमारे वेणुगोपालन सर हैं और हमारे IAI-VRF के लोग रेगुलर पत्र लिखते हैं डीएफएस को, IBA सेक्रेटरी, चेयरमैन को, डिफरेंट ये पत्र कहाँ जाते हैं? अमूमन किसी ऑफिस में कोई पत्र आता तो उसको रिप्लाई प्रॉपर दिया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है, जैसा कि अमूमन होता है। लेकिन इन सब पत्रों का इतने बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल जैसे कि डीएफएस सेक्रेटरी हैं, ये लोग इसका रिप्लाई क्या देती हैं, क्यों नहीं देते हैं? ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जो सिस्टम बना है कि कम से कम इन पत्रों का रिप्लाई देना चाहिए कि गलतियां हुई है या नहीं हुई हैं, या हम ऐसा नहीं कर सकते या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पत्र तो जाता है लेकिन उनका उत्तर क्या आता है। और अगर सही समय पे सही हमारे जुडिशरी ब्यूरोक्रेट्स द्वारा रिप्लाई आए अथवा उसका न्याय किया जाए तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।